Hi guys, are we live now? Just let me know quickly. Confirm कर दीजिए. Are we live now? Is this session streaming? So yes, I think we are live now. Just need your confirmation. एक बार quickly confirm कर दीजिए. Is everything fine so that we can start our session? Okay. Yeah. So a very good morning to all of you. Yes, we are having this session after 2 days, but we have come back with a nice session. तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वी आर गोइंग टू हैव, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो एक बार सभी लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सेशन को ज्वाइन कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन. ठीक है. सो अच्छे फ्रेजेस हैं, अच्छे आर्टिकल है. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट 14th ऑफ अगस्त होमवर्क, 14th ऑफ अगस्त के अगर होमवर्क की बात करें तो इट वाज डन बाय रेखा, अपूर्व, देवता, निशांत, संजीव, प्रवीण, साजिद, अली. ओके, ऑल दिस पीपल डिड द होमवर्क. इन सभी लोगों ने होमवर्क किया था. Today's quote is, if you can stay positive in a negative situation, you start becoming successful. देखिए, if you don't lose hope, as I always say, if you are hopeful, if you are optimistic, if you don't lose hope, then definitely you will be successful. बिकॉज अगर आपने होप खो दिया तो उसके बाद आपके पास आगे का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा. तो बी होपफुल, बी सक्सेसफुल, सिंपल. इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट क्विकली ज्वाइन इन दिस सेशन. एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए. जो भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्पेशली इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, टू लाइक दिस सेशन. ठीक है, सब्सक्राइब टू अवर वाइटल चैनल. Glimpse of the session. As usual, we will start with the revision session. Vocabs we have, idioms and phrases today we do not have, but yes, phrasal verbs have compensated these idioms also. कि you will get maximum idioms and phrases here. तो आपको phrasal verbs आपको काफी मिलेंगे, तो idioms and phrases ये compensate हो जाएगा. Okay. Complete analysis of two articles we are going to do today, but out of that, the first article is very important for your examination. पहले आर्टिकल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी गुड. ओके. ग्रामर लर्निंग, टोन ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, दैट इज होमवर्क, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे. ठीक है. आई गेस बाय दिस टाइम एवरीवन इज सेटल्ड, सभी लोग सेटल्ड हो चुके होंगे. सो एक बार जल्दी से हमें कंफर्म करिए, आर वी रेडी टू स्टार्ट अवर रिविजन सेशन? शैल वी स्टार्ट दिस? लेट मी नो क्विकली गाइस, आर वी गुड टू गो? चलिए, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आई थिंक एवरीवन इज ready now, settled also. चलिए, let's start. Okay. Match these words with their synonyms and antonyms. Let me see who gives the first reply and correct reply. So Arju is there. Well done. Well done. Madhurima, Arju. Others, hurry up guys, quickly. Apur, good. Akshara, good. Yes. See, abstruse, as you know, abstruse basically we call to obscure. To make something obscure, किसी भी चीज को unclear करना, obscure करना, that is called abstruse. So A is matched with third. A की pairing third से होती है. ठीक है. Now there are two words, you need to focus on these two words, इसीलिए मैंने दोनों साथ में दिया हुआ है. See, it is subversive and it is subserve. First of all, subversive is an adjective. Subversive आपका adjective होता है और subserve is a verb. तो यहां से दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. Subversive basically we call to disruptive, trouble making, you can say. So disruptive, trouble making, trouble creating, that is called subversive. And when I talk about the word subserve, subserve basically we call to help to further. Further here means promote. तो किसी भी चीज को प्रमोट करना और फर्दर करना, दैट इज कॉल्ड सबसर्व. ओके, सो इट इज अ वर्ब. एफ विल बी मैच्ड विद फिफ्थ एंड बी विल बी मैच्ड विद सिक्स्थ. आर दीस टू डिफरेंसेस क्लियर? बिकॉज दोनों मिलते जुलते अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो यू विल नॉट गेट दैट डिफरेंस, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. सो सबवर्सिव इज एन एडजेक्टिव, दैट मींस डिसरप्टिव, एंड सबसर्व आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को हेल्प करना, प्रमोट करना. ओके, यस.
Reboot basically we call to revive. So revival, reboot, that is synonym. C will be matched with 7. Misgiving means calm. Calm basically we call to I have no calm. मतलब आप कह सकते हैं complain, grudge, all these are the synonyms of the word misgiving. Okay, so D will be matched with 1. Glaring basically we call to conspicuous, and this is often used in negative context. ये जो glaring word है, this is basically in negative context. Doubt you can say, apprehension you can say, all these words can be said. Okay. So glaring is always used in negative sense. जैसे glaring truth, glaring reality ये हम use करते हैं. So E is paired with 2. And the last seminal basically we call to influential. It will be paired with 4. So yes, 3, 6, 7, 1, 2, 5, 4 is the correct pairing. So many are right. चलिए next slide also we have for the revision. Good morning, Arju. Good morning, everyone. Deepak, everyone. Stark also you can say a pool. Glaring stark, you can say. Very good. Yes, well done, Arju. Others, hurry up, mark your answers. Good, Madhurima. Let's see. Let's check. Preponderance basically we call to prevalence of something. Preponderance of something means prevalence. किसी भी चीज का prevalence, that is called preponderance. So A is paired with third. Sine qua non, as I told you, it is a Latin phrase. एक Latin phrase है that means something that is absolutely necessary. So something that you cannot omit, that is very much important. That is called sine qua non. So B will be matched with seventh. In substance means essentially it will be paired with sixth. Abreast of means cognizant, aware. किसी भी चीज के बारे में aware होना, that is called abreast of. So it will be paired with fourth. Jeopardize means endanger, किसी भी चीज को endanger, खतरे में डालना. So E will be matched with 2. Autocracy is totalitarianism, मतलब complete तानाशाही. इसको आप ये भी कह सकते हैं despotism. Despotism can also be the answer of this autocracy. So F will be matched with first. And preemptive basically we call to forestall something. G is paired with fifth. Absolute is also correct. That is absolute necessary. Absolute can also be used as an adjective. Okay. Absolute necessary is the correct phrase. Chale, let's start today's session, guys. The first word of today's session is sparse. Now, sparse basically we call to scanty, scattered. Okay. Now, sparse, the opposite will be dense. Just we said densely populated and scarcely populated. These are the two words. Okay. So, sparse is an adjective that refers to scanty, scattered, and opposite not plethora. देखिए ये आपको फिलर्स में बहुत ज्यादा मिलेगा. डेंस बेसिकली हम यूज करते हैं पॉपुलेशन के लिए. स्पार्स आल्सो वी यूज फॉर पॉपुलेशन. तो कहीं पर अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो वी यूज स्पार्सली पॉपुलेटेड, स्पार्सली वेजिटेटेड एरिया. ओके. एंड डेंस इज यूज्ड एज एन अपोजिट. ओके. सो स्कैंटी, स्कैटर्ड, जो छिटपुट है, दैट इज द मीनिंग. ओके. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्रम्बल. So crumble is a verb that means fall down or collapse. Okay. So fall down, disintegrate, collapse, all these are the synonyms of the word crumble. Next word we have is copious. Copious is also an adjective. Now copious we can call to plethora, abundant, profuse. Okay. So all these are plenitude. मतलब किसी भी चीज की अधिकता. So copious का मतलब होता है अधिकतम, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जो अधिकता होती है, that is called copious. Crumble का मतलब होता है fall down, collapse कर जाना, गिर जाना, ढह जाना, जिसको हिंदी में कहते हैं. Okay. And sparse basically we call to scanty, that is less populated. Okay. Next word we have is surfeit. Surfeit is noun that means excess or surplus. Okay, if you talk about the meaning, they both are same. Copious is an adjective, surfeit is a noun. So surfeit basically we call to excess of something, surplus of something. You can even use the word plethora here also. Okay. Remember, surfeit is a noun. Simple. Good morning, everyone. Yes. Next word we have is erratic. Erratic is an adjective. Erratic means something that is inconsistent.
Something that is unpredictable means something that does not follow a proper pattern. जो एक proper pattern follow नहीं करता है, that is called erratic. So unpredictable, inconsistent, variable, all these are the synonyms of the word erratic. Okay. Errand is different. Run on an errand. Basically, errand we call to work, and erratic is an adjective. Okay. Meaning of what? Verbose you are talking, Sridhar. Verbose we call to full of words. You can use the word loquacious. Talkative, that is called verbose. Okay, verbosity, verbose, that is loquacious. Talkative, that is verbose. Full of words. Okay, हाँ, बहुत सारे synonyms हैं. Next word we have is ori. Ori basically we call to away from usual or expected course. Okay, you can use the word amiss, you can use the word wrong. This is the word SSC often asks. ये नया term नहीं है SSC के लिए. These are the words that have been asked innumerable times in SSC. Verbose, loquacious, garrulous, talkative, gabby, all these words. ये सब SSC के लिए ही बने words हैं. These words are for SSC, by SSC, जो भी आप कह लीजिए. ठीक है? तो ये मतलब these are often repeated words of SSC. Yes. Gift of gap, yes. Now listen, ori with gift of gap is हाँ कह सकते हैं आप. ठीक है? Ori from the usual or expected course, is wrong. That is the meaning of ori. It is an adjective. Okay. Next word we have is haphazard. Haphazard basically we call to random, unplanned, disorderly. Haphazard मतलब कोई भी चीज जो randomly होता है, disorderly. You can even use the word unorganized. Something that is not properly organized, that is also called haphazard. It is also an adjective. Yes. Clear everyone? चलिए next. Freak. We say na freaking out. Freak basically we call to aberration, abnormality, irregularity. It is a noun. It is a noun. So almost they carry the same sense. जैसे अगर आप freak की बात करेंगे और अगर आप औरी की बात करेंगे, तो almost they carry the same sense. औरी is just an adjective, okay, and freak is a noun. Random you can say, not impromptu. Impromptu means एकदम से, without much thought, okay. हाँ आप कह सकते हैं impromptu also without any proper consideration, without any thought you can say. ठीक है. Freak we call to aberration, abnormality, irregularity. That is the meaning of the word freak. Freak is noun. Okay. Next word we have is peril. Peril is also noun. That is called danger. Wanton. Wanton has two meaning. पहले तो wanton का मतलब होता है immoral, licentious, shameful. Okay. And wanton also we call to cruel, malicious, aimless, useless. So wanton activity means very, very illegal activities. Cruel, malicious, aimless, useless. So all these are the synonyms of the word wanton. Okay. Next word we have is subsidence. Subsidence basically we call to the gradual sinking of an area or land. ठीक है. Collapse. जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्या कहा जाता है? Landslide. So you can subsidence, you can even use this term for landslide. So the gradual sinking of an area of land or collapse, वो जो landslide होता है, तो that can be called subsidence. So it is also a noun. It is also a noun. Okay. Next word we have is upheaval. Upheaval is noun that refers to disruption, upset. So it has caused so much upheaval, chaos you can say, disruption, upset, chaos. So all these are the synonyms of the word upheaval. It is noun. Okay. हाँ भूस्खलन, correct दीपक. So ये landslide मतलब भूस्खलन also. Yes, correct. Next word we have is concerted. Concerted is an adjective. Now from here we have the vocab of second article. Okay. Concerted, upset can be a noun. Upset can be a disruption, upset it can be a noun. Chaos, all these can be the synonyms. Okay. Subversive can be the synonym, but subversive is an adjective. And upheaval is what? It is a noun. Okay. Next. Concerted we call to joined or united. Okay. Concerted means joined or united. Next word we have is envisage. Envisage is a verb. Envisage basically refers to predict, board, foretell, indicate. ये buzzword है जो हम लोग हर सेशन में देखते हैं. तो envisage मतलब किसी भी चीज को indicate करना, predict करना, board, foretell, all these are the synonyms of the word envisage. Okay. Yes. Augur, so many words we have. Presage, augur, so many words we have. Okay. Yes.
Next word we have is expeditious. It is an adjective. Expeditious basically we call to speedy, swift, quick. कहते हैं ना विश्व and expeditious recovery. So expeditious recovery means speedy recovery. Concert is different. Concerted is an adjective that means united. Okay, joint effort. Next word we have is stance. Stance is noun that refers to your attitude, your stand, opinion. You can even use the word viewpoint. So stance basically we call to your viewpoint, your opinion, your stand towards something. That's called your stance. Okay. Next term we have is topography. Again an important word. टोपोग्राफी वी कॉल टू स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेस. तो ये आपके एसएससी में आ सकता है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं लॉजी वगैरह ग्राफी वगैरह. सो स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेस की कहाँ की लैंड कैसी है. सो स्टडी ऑफ दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी. इट इज अ नाउन. ओके. Phrasal verbs, we have many phrasal verbs. The first phrasal verb is spilling into. Spilling into का मतलब होता है to go beyond the borders or parameters of something. देखिए spill into का मतलब क्या होता है, जैसे water आपने कंटेनर में रखा है. Now when this water will be filled till brim, उसके ऊपर अगर आप डालेंगे तो it will be spilled. It will spill, right? तो ये स्पिल होकर के किसी और कंटेनर में या कहीं और जगह फैल जाएगा. तो स्पिल इनटू का हिंदी मतलब होता है फैल जाना. मतलब कोई चीज इतना ज्यादा हो जाए, something that is so large in quantity that it starts crossing its border. It starts flowing into something other. So that is called spill into. Did you get the point? Understood the meaning? So we can use this spill into for any liquid or anything that is too much, so great in intensity or number that it starts overflowing from that particular point. Okay, or baki jagah fail jaye, that is called spill into. Okay. Next word we have is factor in, another very important phrasal verb. Factor in basically we call to take something into account. किसी भी चीज पे ध्यान देना. ठीक है. To include a particular fact in one's calculation. कि whenever you are planning something, in your consideration आप किसी fact को mind में रख रहे हैं, so that is called factor in. Please factor in the chances of failure also while you are preparing for any competitive exam. मतलब जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो यू शुड फैक्टर इन द चांसेस ऑफ फेलियर आल्सो. कि फेलियर के क्या चांसेस होते हैं आपको उसको भी समझना पड़ेगा. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आपको फिर डिप्रेशन वगैरह चीजें होने लगती हैं. राइट. स्पिल द बीन, एज यू नो, स्पिल द बीन मींस रिवील सीक्रेट. यस. लेट द कैट आउट ऑफ बैग. यू कैन यूज द वर्ड डाइवल्ज. चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज शेल आउट. शेल आउट वी से पे और स्पेंड. ठीक है. एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है तो खर्च करना. शेल आउट, आई हैड टू शेल आउट एक्स्ट्रा मनी ऑन बैंक टोमेटोज. नाउ द एंटायर इंडियंस दे हैव टू शेल आउट एक्स्ट्रा फॉर टोमेटोज. मतलब उनको ज्यादा स्पेंड करना पड़ा परचेज करने के लिए टोमेटोज. ओके. सो पे और स्पेंड, दैट इज कॉल्ड शेल आउट. ओके. Next word we have is go into something. So go into something means discuss, describe or explain something. किसी भी चीज में विस्तार से चर्चा करना. To explain something clearly in detail, that is called go into. Elucidate also is the word that you can use. Because elucidate also we use for explaining or describing, right? So that is called go into. Clear? Are these terms and phrasal verbs clear? Shelled, V2 form is shelled only, SHELLED. Shelled, okay? चलिए 60 रुपीज पर केजी नाउ कहां पर मिल रहा है. ओके गाइस, वी हैव बैंकिंग सुपर एलीट प्लान. दोज आर इंटरेस्टेड, आपको पता होगा ये जो 2x वैलिडिटी थी 16 अगस्त को वो एंड होने वाली थी. एक दिन के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है किसी भी ऑफर की. ओके. सो यू कैन ज्वाइन बैंकिंग सुपर एलीट यूजिंग माय कोड सबा. You can use my code Saba, and today is the last day of this 2x validity. So those who are interested in purchasing Oliveboard subscription, they can definitely use my code Saba for additional discount. Okay. In the same way, we have a SSC Super Elite plan also. So you will get flat 45% off on SSC subscription also. So those who are interested, they can join SSC course now. And recently we have launched batch for CHSL2. Second batch for CHSL Tier 2 is also launched. So you can definitely join that batch, those who didn't join first batch. ठीक है. आयुष्मान बैच अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो वी हैव संकल्प बैच फॉर टीयर 2. सो दोज हु फील कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो दे कैन ज्वाइन दैट संकल्प बैच. ओके.
Use my code Saba for purchasing anything on Oliveboard platform. Join this Telegram channel for updates and for PDF. किसी भी सेशन के अपडेट के लिए पीडीएफ के लिए यू मे ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल लर्न इंग्लिश विद सबा. ठीक है. रीड दिस आर्टिकल गाइस. पहले एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करिए गाइस. Please do hit the like button and share this session with others. Read it. It is a very important article. वेदर से रिलेटेड इस बार बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको आईबीपीएस पीओ में भी डिस्क्रिप्टिव के लिए मिल जाएगा. So RC and in your descriptive for both the things this article is very important. Okay, so read it carefully everyone. Let me know, text me quickly, message करिएगा once you have read everyone. So okay, maximum have read. Now after reading this, why for what this headline is unnecessary break should be on what? किस चीज पर ब्रेक अप्लाई करना है? Tell me quickly. Yes, you all have read this. Now, what did you understand? Why the author has used the word unnecessary break? So, break on what? Upper tone we will discuss. Just reply for what we are using this word unnecessary break. Break on what? Heavy rain पे आप कैसे break लगा सकते हैं? Rain is something not in your control. Unplanned development. Very good. Yes, break means we have to put a break on this development. ओके, नॉट वेदर फोरकास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स. अब देखिए यहीं पर अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है कि व्हाई द एडिटर हैज यूज्ड द वर्ड अननेसेसरी ब्रेक. सो ब्रेक हैज बीन यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वर्ड ब्रेक यूज हुआ है ताकि वहां पर अगर आप डेवलप, देखिए weather pattern is not in your hand, that is not in our control, nobody can control that. Okay, but yes, there are a few things that is in our hand and we should immediately stop all those things. हमें उसको immediate basis पे रोकना पड़ेगा, then only we will be able to save the people, save that area. Okay, so on altered weather patterns and infrastructure development. So just keeping this altered means changing weather patterns कि the rapidly जिस तेजी से जिस फ्लो से weather pattern change हो रहा है. Okay, and infrastructure development. So we have to put a break on infrastructure development. Got the point? Now, haphazard development. So editor is not blaming the environment because we can't change environment, that is not in our control. Okay, but yes, unplanned development. Haphazard means unplanned development. Okay, irrational, illogical development is increasing the impact of weather events. So as you know, everything global warming, everything is just the because of industrialization. ठीक है, ये जो इतनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा बढ़ा है इसी की वजह से जितने भी प्रॉब्लम हो रहे वेदर में, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. ठीक है, so unplanned development, it is increasing the impact of weather events. Okay, being an El Nino year, this year is very significant because it was predicted that this is going to be El Nino year. So I hope by this time you are aware of the word La Nino and El Nino. Okay, these two are basically factors that help in flood and drought. El Nino and La Nino. Okay, since this year it was El Nino year, the expectation was that North India would see a sparse monsoon. Sparse means less monsoon, infrequent monsoon. Since it was in the characteristic of El Nino is what? Whenever we will have El Nino year, so that time उस साल आपको बारिश कम देखने को मिलेगी. The monsoon will not be constant. The monsoon will be very less infrequent. Okay. However, matlab expectation was of less rain. However, the pendulum has swung the other way.
बट हमने कुछ अलग ही देखा. वी सॉ सो मच ऑफ रेन, राइट? तो यहाँ पर प्रिडिक्शन था कि वी विल हैव लेस मॉनसून दिस ईयर, बट द पेंडुलम हैज swung अदर वे, मींस वी गॉट टू सी जस्ट द अपोजिट. हमने जस्ट अपोजिट देखा. ओके, जुलाई सॉ रिकॉर्ड रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड उत्तराखंड, and the rare sight of Yamuna nearly spilling into the Red Fort in New Delhi. So in July only, even though the prediction was of less rain, but just opposite happened, and July month we saw record rainfall in many parts of the country. आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, पंजाब, उत्तराखंड and even Delhi also we saw the highest rainfall, record rainfall in the month of July. And that was the reason कि आपका जो दिल्ली था वो flooded हो गया था, okay? Because यमुना का जो पानी था वो overflow होकर के spill into means overflow till Red Fort तक पहुंच गया था. You all might be aware of that. And this is something that is rare. Delhi's people, okay, Delhites, they मतलब दे लॉन्ग फॉर, दे यार्न फॉर रेन. वो रेन की, बारिश की क्रेविंग करते हैं. एंड दिस इज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब हमारे जनरेशन के लिए तो पहली बार ही ऐसा होगा कि वी सॉ दैट दिल्ली वाज ओवर फ्लडेड. ओके, तो ये एक रेयर साइट थी जो हमें इस बार देखने को मिली. At least 150 were killed and losses worth rupees 10,000 crore were reported by Himachal Pradesh alone. Now, alone, if we talk about Himachal Pradesh, so 150 people died. अभी हम अभी की बात नहीं कर रहे. This I'm talking about July. So 150 people were killed in July and approximately 10,000 crore की जो property थी उसको नुकसान हो गया था. Okay. The worst, however, was yet to come. लेकिन this is not the worst picture. Worst तो अभी आना बाकी था. ये तो खराब तो चीजें हैं, बट द वर्स्ट सिनेरियो वाज येट टू कम. वो अभी आना बाकी था, एंड दैट वी सॉ दिस वीक. अभी आपने देखा होगा सैटरडे संडे किस तरह से हेवी रेन हुआ है वहां पर. ओके, सो द वर्स्ट हाउएवर वाज येट टू कम एज द वीक सॉ मल्टीपल फ्लड्स. वीक मींस दिस करंट वीक, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड वीक ऑफ ऑगस्ट. ओके, सो वीक सॉ मल्टीपल फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड that have claimed at least 60 lives since Sunday. Means on a from Sunday till now, from Sunday till Wednesday, we saw that 60 people have lost their lives in Himachal Pradesh. So worst picture was yet to come. Worst picture, worst scenario अभी आना बाकी था. A series of landslides has crumbled buildings. Crumbled means collapsed, fell down, and blocked highways. इतने सारे landslides due to heavy rain, we got to see series of landslides, and because of that, many buildings have crumbled. बहुत सारे buildings आपके raised हो गए हैं. Okay, they have been collapsed. Okay, and the trees and all these things, वो जो road damage वगैरह हुआ है, so they have blocked the highways also. Okay. The immediate explanation for the landslides is unexpectedly copious rainfall that these states have received, and that these in turn are due to surfeit of western disturbances. Now, what is the first reason? So the moment we see such a thing, so first reason is that unexpectedly copious rainfall, too much, abundant rainfall. So these states saw too much of rainfall, so that is the main reason behind all this chaos. ये पूरा जो disaster है उसका सबसे बड़ा reason आपका क्या है? Rainfall. Okay, and we have got this rainfall, this much heavy rainfall is because of the excess of western disturbances. ये किसकी वजह से हुआ? Western disturbances. ये भी एक natural phenomena है. Because of that we saw so much of rain. Okay, yes. These are tropical storms. Now western disturbances होते क्या हैं? So western disturbances are tropical storms that originate in Mediterranean region and normally bring winter rainfall to North India. Try to understand the entire geography. Western disturbances are tropical storms and they originate in Mediterranean region. ठीक है? But they are supposed to bring rainfall during winter season. मतलब ये Feb March तक, January Feb March में ये rainfall लाते हैं. Okay. However, right from the beginning of this year, the WD have been erratic. But अगर हम इस साल जनवरी से देखेंगे, if we see, consider since January, so the western disturbances have been erratic. Erratic means inconsistent, unpredictable. There were too few of them in December and January, and their absence was cause for the hottest February recorded in India in at least a century. You saw that February month was the hottest month for India in last 100 years. 100 सालों में इतना hot February कभी नहीं हुआ था. So the reason is just because of the western disturbances. They should have brought rainfall during January. ठीक है, December January में इनकी वजह से बारिश होना था, but they didn't bring any rainfall during December January, and because of that we saw hottest February in this year. Okay, 2023 में हमें सबसे गर्म February month देखने को मिला.
फेब इज बेसिकली अ कोल्ड मंथ, बट अगर आप टेम्परेचर वाइज कंसिडर करेंगे तो 2023 में जो फेब्रुवरी मंथ था दैट वाज द हॉटेस्ट इन 100 years. Okay. However, see, this line is very important. The WD appeared to be overcompensating for their absence, with several of them incident over North India in the last 2 months, a time when they normally should not be around. Now, see, this line is very important. So, WD, that is Western disturbances, they should have brought rainfall during December and January. Okay? December, January, Feb तक इनको rainfall लाना था. But they didn't bring rainfall that time. उस time वो rainfall नहीं लगा. But they have overcompensated, मतलब इस टाइम ये नहीं आ पाए, they couldn't bring the rainfall, so they have overcompensated that in the month of July and August. मतलब जुलाई अगस्त में इन्होंने ओवर कंपेंसेट कर दिया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर कंपेंसेशन वी गॉट टू सी फ्लड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. डिड यू अंडरस्टैंड द पार्ट? Okay. And this is the time when normally they should not be around. See the weather disturbances, guys. इनको आना कब तक? दिसंबर जनवरी में. ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कभी भी मॉनसून में बारिश नहीं होती है, बट दिस टाइम ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन, मॉनसून से तो जो बारिश हो रही है, but apart from that, western disturbances are also playing very important role in this rainfall. So they should not be present. They should not have been present this time. But this, because of this complete change in the environment, ये पूरी cycle जो change हुई है, so we get to see such heavy rainfall during this time. अंडरस्टूड द पार्ट? और देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रही है दिस आर्टिकल. यू गेट टू नो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है इनका, रेनफॉल कब होता है, पैटर्न क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स वी गॉट टू नो. ओके. While a combination of WD and monsoon can be dismissed as freak weather, climate scientists have been warning of increasing probability of such high risk events. Okay. Now, as I told you, monsoon is also there, WD is also there, so that can be dismissed as freak weather. ठीक है? And climate scientists, they have been warning of, वो पहले से ही हमें warn कर रहे हैं of the increasing probability of high risk events. Okay, because of seeing this pattern, so scientists, okay, they have already been warning us that we can see some very risky scenario this time. Okay. The ORI WD, ORI means again inconsistent. WD, ठीक है, amiss you can say. ORI basically we call to wrong. They are at the wrong time. Okay. Yes, freak we call to erratic, but freak is noun. Okay, here. So the ORI WD are in part due to warming Arctic that causes the polar jet stream, which carries moisture to deviate from its regular path and bring the disturbances to North India during the monsoon. Now, why is the reason why WD is active? WD are active this time. Monsoon के time पे ये क्यों active है? Okay. It is because of the warming Arctic. Arctic region आपका warm कर रहा है, and that causes polar jet stream, जिसकी वजह से polar jet stream cause हो रही है, and this polar jet stream carries moisture. इनके अंदर moisture होता है to deviate from its regular path. कि मतलब they are causing moisture to deviate from its regular path, and that moisture is coming to North India, and that is during the time of monsoon they are also causing rain. ठीक है, monsoon से बारिश हो ही रही है और WD की वजह से भी बारिश हो रही है. So the complete process of WD has been explained here. Okay. It is in the context of these altered weather pattern that warnings by scientists and environmentalists of perils of wanton construction in Himalayas must be factored in. Now it is high time we factored in all the warnings given by the scientists. So scientists have been constantly warning that we have to stop construction sites. Okay, तो ये जो भी useless construction चल रहे हैं, ठीक है, और यू कैन से यहाँ पर इसका सेंस है कि मतलब टू मच कंस्ट्रक्शन एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड. तो ये एक तरह से मलिशियस का सेंस दे रहा. वांटन हियर मींस मलिशियस, बैड. So they have been warning us of this malicious construction in Himalayas areas. उससे क्या खतरा होगा? Scientists have been warning us, but the government is not paying any attention towards this, and that is the reason why every now and then we see so much disaster in hilly areas, especially during the time of monsoon. Okay, the ongoing Char Dham रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट, चार धाम यात्रा आपको पता है, तो वहां पर एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, चार धाम रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट हैज लेड टू लार्ज स्केल ऑल्टरिंग ऑफ माउंटेन्स विद सिग्निफिकेंट चंक्स कार्व्ड अवे, रेंडरिंग देम वल्नरेबल टू अपहेवल.
Now even for this project, ये जो चार धाम रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, so because of that also we have altered the mountains, मतलब हमने भी माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन्स को कट किया है और with significant chunks means blocks, carved away means उनको काटा वगैरह गया है, okay, and because of that we are getting to see so much of disturbance and chaos, इसकी वजह से आपको इतने सारे disturbance वगैरह देखने को मिल रहे हैं, okay. As recent fears of land subsidence in Josimath, Uttarakhand demonstrated, ill-thought construction and haphazard building practices have magnified the risk to residents who live in these regions. Okay. Now, fears of landslides, ठीक है, especially in Joshimath area, Uttarakhand. So these have demonstrated the ill-planned constructions, जो पूरी तरह से बिना किसी consideration के जो construction area बहुत rapid construction किया जा रहा है, so that have been already highlighted by the scientists. And now these things have magnified the risk of the residents. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? जो उस एरिया में रेजिडेंट्स हैं, they are losing their houses, they are having all the troubles. Okay, so government should focus on these things, that they should not carry out any such irregular development work. Okay. While state governments tend to search for short-term solutions such as demanding compensation from the Center for Disaster Relief, it is time that more serious thought is given to the nature of infrastructure development and, if need be, restrictions imposed in the larger interest of minimizing hazards and maintaining stability. Now, what the Chief Minister is saying, doing, state government जो वहां की है, they are relying on short-term solution. Short-term solution क्या हो गया? Disaster हो गया. Now they are seeking help from the center. वो center से मदद मांग रहे हैं कि उनको कुछ पैसे दे दे ताकि they can overcome all these things. Okay, but it is high time this government focused on the nature of infrastructure development. If they are carrying out any development project, so they should have proper planning, proper understanding of that project, that it should not affect the environment. Okay, वो environment को बहुत ज़्यादा affect नहीं करना चाहिए. Okay, and there is a need to impose restrictions. ठीक है, कि जो भी इस तरह के construction काम चल रहे हैं उस पर restriction भी डालने की जरूरत है. Then only we will be able to maintain stability and we will be able to minimize hazards. तभी हम danger को कम कर सकते हो, स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं. ओके, फाइंड द टोन. If I talk about the dominating tone, yes, you can say analytical or expository. वैसे अगर आप एनालिटिकल से भी ज्यादा देखेंगे तो इट इज एक्सपोजिटरी, एक्सप्लेन ज्यादा किया गया है. ठीक है, complete WD, all these things have been explained. Okay, suggestion also we have at the end. See, expository and informative can be same. There is no difference between expository and informative. They can be same. ठीक है, एनालिटिकल आप कह सकते हैं, टेक्निकल नहीं कहेंगे बिकॉज डेटा इज नॉट प्रेजेंट. ओके, सो अगर डेटा प्रेजेंट होता तो फिर वहां पे हम टेक्निकल कह देते, बट ओवरऑल एनालिटिकल यू कैन से. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द ओवरऑल डोमिनेटिंग टोन, इट इज एनालिटिकल. डोमिनेटिंग टोन इज एनालिटिकल. ठीक है, देखिए टोन भी आप हमेशा देखेंगे पैराग्राफ वाइज पूछा जाता है. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ, सो फर्स्ट पैराग्राफ इज प्योर एक्सपोजिटरी इंफॉर्मेटिव, लिटिल बिट क्रिटिकल वी हैव, little bit critical. Okay, that too because of unplanned construction and all this thing. Data दिया हुआ है, that little bit data, तो वो सिर्फ डेथ के लिए. नो. ओके, चलिए now next article. हाँ, अब बिट डेटा वो डेथ वगैरह से रिलेटेड दिया हुआ है, बट स्टिल इफ सी, अब आपको एनालिटिकल टेक्निकल में से कोई एक दिया होगा, दोनों नहीं दिया होगा. ठीक है, when we have such close options, तो examiner also knows कि students will get confused, तो उसके accordingly वो option देते हैं. ठीक है, now next article is on housing for all, on scheme to help the urban poor build houses in cities. मतलब गवर्नमेंट इज 15th of August को our prime minister, he announced that he is going to bring, ठीक है, some development projects, okay, housing development projects to help all the urban poor build their homes, ताकि उनकी मदद हो जाए, वो अपने घर बना ले. ठीक है, addressing housing shortage in urban areas requires urgent concerted efforts. Concerted means joint efforts, means central government और state government दोनों लोगों के joint effort होंगे, then only we will be able to address, we will be able to meet housing shortage in urban areas. Urban area में generally आप देखेंगे कि वहां पे घरों की कमी होती है लोगों, and there are many people who have to sleep on footpath. Okay,
The announcement by Prime Minister Narendra Modi of a scheme to help. So अभी उन्होंने clearly mention नहीं किया, but yes, he has announced of a scheme to help the urban poor build houses in cities is a signal that government is to undertake one more plan. So already आपकी ये plan चल रही है, that is प्रधानमंत्री आवास योजना. This plan is also already underway, ठीक है? But he is talking about another plan apart from this प्रधानमंत्री आवास योजना. इसके अलावा भी ये किसी एक plan की बात कर रहे हैं to address the problem of a shortage in urban housing, so that urban areas में जो भी metropolitan cities है वहां पर जो housing problem है उसको हम किसी भी तरह से उसको problem को solve कर सके. Okay, even 5 months ago its stand means attitude, point, opinion was that no new housing scheme had been envisaged following the extension of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban till December 2024 with the focus on expeditious completion of section houses. अभी 5 months ago प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड दिस, ठीक है, ये अभी उनका अनाउंसमेंट था कि दे आर नॉट गोइंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी न्यू हाउसिंग स्कीम, ठीक है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड द लिमिट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको बढ़ा दिया है. सो दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग एनी न्यू हाउसिंग स्कीम एटलीस्ट टिल December 2024. एंड देयर मेजर फोकस विल बी, उनका मेजर फोकस जो होगा दैट विल बी the expeditious completion, ठीक है, क्विक completion of all the sanctioned houses. मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में जिन लोगों को घर मिला है पहले उसको कंप्लीट करना उनकी प्रायोरिटी होगी, ना कि कोई नई स्कीम लाना. डिड यू गेट द पॉइंट? बट इमीडिएटली एकदम 15 अगस्त को आकर के उन्होंने सामने से अनाउंस कर दिया कि नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग वन मोर प्लान, वो एक और प्लान लाने की सोच रहे हैं, ठीक है. But an appraisal of PMAU may have caused the shift in stance. So stance stand escape. लेकिन ये जो एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का, so it may have caused the shift in their opinion कि अब उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ा. It also indicates that housing for all is still a long way away. मतलब just bringing one योजना will not help everyone. बिकॉज वी नीड, सिर्फ थ्योरेटिकल कह देने से कोई भी चीज नहीं होती है. गवर्नमेंट नीड टू वर्क ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड, उनको ग्राउंड पे आकर के काम करना पड़ेगा तभी वो सबको हाउसिंग दे सकते हैं, ठीक है. तो ये जो स्लोगन था हाउसिंग फॉर ऑल, इट इज अ स्टिल लॉन्ग वे अवे. लॉन्ग वे अवे मींस इट हैज नॉट बीन अचीव्ड, मतलब वो मैक्सिमम पार्ट उसका अभी तक अचीव नहीं हुआ है. ओके, इन द लास्ट 8 years, नाउ दिस इज डेटा, ठीक है, in the last 8 years since the launch of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, ठीक है, only 2/3 of the sanctioned houses or 76.25 lakh houses out of about 1.19 crore sanction were either completed or handed over as on August 14, ठीक है. मतलब 8 years ago this योजना came into effect. 8 साल पहले ये योजना लागू की गई थी. एंड आफ्टर 8 years इफ यू सी ओनली 2/3 ऑफ द हाउसेस, 2/3 घरों को ही चाबियां मिली हैं, उन्हीं को हैंड ओवर किया गया है. तो अगर आप नंबर में बात करेंगे सो 1.19 करोड़ हाउसेस वर सैंक्शन, but out of this 1.19 crore houses only 76.25 lakh houses have been handed over. या तो वो कंप्लीट हुए हैं या वो हैंड ओवर किए गए हैं. कब? अगस्त 2014, इस अगस्त की बात हो रही है 2023 में. The central assistance released was 1.49 lakh crore. हेल्प कितने की थी? सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी हेल्प देने वाले थे? 1.49 लाख करोड़ की हेल्प आने वाली थी. कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट से. The center's share has been limited to 24.4%. और अगर ये इतना वे भी देखें, so the share of the percentage share of the central government would have been only 24.4%, ठीक है, while that of states and urban local bodies is 16%. So in this Pradhan Mantri Awas Yojana, even state government had to help. So the share of state government and the local bodies was 16%. Central government का कितना था? 24.4% and 16% was to be borne by state governments. Remaining 60%, अब इसको छोड़ दीजिए तो लगभग जो 60% होते हैं, so remaining 60% has to come from beneficiaries, ठीक है. अगर किसी ने 10 लाख का घर लिया, प्रोबेबली अभी तो 10 लाख में कुछ नहीं मिलेगा, बट 4 लाख की ही हेल्प होने वाली थी. कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से. बाकी का 6 लाख उसको पेयर करना था, वो आपके बेनिफिशियरीज को ही पेयर करना था, ठीक है. तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं था, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है,
हाँ, द सेम आई सेड कि 10 लाख अगर घर है तो 4 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी, राइट? ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 8.31 लाख करोड़, ठीक है, फॉर द रुपीज 1.23 करोड़ हाउसेस ओरिजिनली प्रपोज, द बेनिफिशियरीज अर्बन पुअर हैव टू शेल आउट 4.9 लाख करोड़। इसको डेटा कहा जाता है। दिस इज टेक्निकल दैट आर्टिकल, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट का डेटा दिया हुआ है। तो ये डेटा नहीं होते कि 150 पीपल डाइड, दैट इज नॉट डेटा। वो एक नंबर दिया गया है कि इतने लोगों की डेथ हो गई है। डेटा इसकी जहां पर पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको डेटा रखा जाए, ठीक है। सो here of the estimated total investment of rupees 8.31 लाख करोड़, ठीक है, 1.3 करोड़ का जो पहले हाउसेस थे, ठीक है, जो प्रपोज किए गए थे, इस पूरे इन्वेस्टमेंट में 8.31 लाख करोड़ में सो 4.95 लाख करोड़ हैड टू कम बाय द पुअर ओनली। ये जो अर्बन पुअर थे उन्हीं को खर्च करना पड़ता। ओके, शेल आउट मीन्स स्पेंड, यस। Under the proposed scheme, the share of beneficiaries should be brought down to at least 40%, as the parliamentary committee report highlights, as beneficiaries are not in a position to fully pay their share because of their low income. काफी informative article आपके लिए, ठीक है। ओरिजिनली व्हेन दिस स्कीम वाज प्रपोज, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम को जब प्रपोज किया गया था, तो ये कहा गया था कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जो पुअर पीपल है, उनका शेयर कितना आना चाहिए? 40%, लेस देन 40%, ठीक है। मिनिमम उनका शेयर 40% आना चाहिए। बट अभी क्या है? जस्ट अपोजिट है, कंट्रारी व्हाट इज हैपनिंग, 60% दे आर बेयरिंग, 40% द गवर्नमेंट इज बेयरिंग। बट ये अपोजिट होना था, ओनली 40% हैड टू बी बोर्न बाय द पुअर, बिकॉज दे आर पुअर पीपल, तभी तो गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रही है। सो हाउ दे विल मैनेज 60%? तो इस तरह से उनको थोड़ा सा हेल्प मिलना था कि उनका जो शेयर था वो 40% तक लाना था, ठीक है, एज इट वॉज प्रपोज इन दैट स्कीम, जिसको यहाँ पे प्रपोज किया गया था। बिकॉज दिस पीपल, पुअर पीपल आर बेसिकली लो इनकम पीपल, सो दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज। और आपको पता है 10 लाख हमने एक रैंडम फिगर लिया, 10 लाख में तो कोई घर आएगा नहीं, मिनिमम 20-25 लाख तो दे हैव टू स्पेंड, राइट? Even though some state governments try to help such beneficiaries access bank loans, financial institutions have been lukewarm in their responses, citing the lack of proof of sustained income. Even though many state governments, many financial institutions, they have been very compassionate, because उन लोगों को वो easily loan access कराएंगे, ठीक है, और उनसे कोई बहुत ज्यादा proof वगैरह भी नहीं लिया गया है. So they have been lukewarm means moderate. You can say helpful. Here lukewarm means वो बहुत strict नहीं थे. So they have been lenient. Lukewarm here you can say lenient in their approach. Okay. So वो अपने approach में lenient थे, so that they didn't ask for proof and all these things. उस पे बहुत ज्यादा उन्होंने loan वगैरह deny नहीं किया. So they have been very compassionate. Okay. The parliamentary committee also made well considered suggestions on the implementation of this Pradhan Mantri Awas Yojana, and the government would do well to examine them while drawing up the proposed scheme. ठीक है? So parliamentary committee they have given good suggestions, ठीक है, इस पूरे योजना को implement करने के लिए they have given good suggestions, okay, and the government do well, would do well, और government भी अच्छा काम करेगी इन सबको examine करने में, ठीक है। The committee's most significant recommendation is on the need to drop uniform and fixed assistance across the country, as followed in Pradhan Mantri Awas Yojana, and adopt a flexible arrangement instead, depending on the topography and other factors. So this parliamentary committee who is giving the suggestion to government, okay, so they have made a very important recommendation that like the government cannot have uniform assistance across the country. वो पूरा यूनिफॉर्म असिस्टेंस, बिकॉज दे हैव टू ड्रॉप द यूनिफॉर्म एंड फिक्स असिस्टेंस, कि मतलब सबको एक जैसा हेल्प अगर वो देंगे तो दैट विल नॉट वर्क, वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट शुड हैव फ्लेक्सिबल अप्रोच, दे कैन नॉट हैव वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉर एवरीवन, ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी एंड अदर फैक्टर्स दे शुड हैव फ्लेक्सिबल अप्रोच व्हाइल प्रोवाइडिंग दिस सब्सिडी, इस सब्सिडी को, ठीक है, प्रोवाइड करने में. Reasons behind poor quality of the houses and prevalence of unoccupancy should to be gone into means consider. इसको भी deeply consider करना चाहिए. Okay. High land costs, floor space index restrictions, and multiple certification from different agencies are factors that determine the success of urban housing. Okay. तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे हाईलैंड कॉस्ट हो गया, फ्लोर स्पेक्स इंडेक्स रेस्ट्रिक्शंस, मल्टीपल सर्टिफिकेशन चाहिए. सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स because of which we can say that whether any urban housing is successful or not. Okay. Now this calls for central government organized discussion.
इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए कॉल फॉर मीन्स so all these things demand central government organized discussions with the relevant agencies such as state government, local bodies, urban planning bodies, urban sector professionals, financial institutions and activists, and there is enough time for the union government to formulate new scheme. Now, whenever government announces any scheme, so they have enough time to formulate that scheme. ठीक है, उनको उस scheme को formulate करने के लिए उनके पास बहुत time होता है. So the government should have well planned discussion with multiple agencies, like state government के साथ हो गया, जो भी local bodies है, urban planning bodies है, इन सबके साथ government का एक पूरा proper discussion होना चाहिए, right? दिस टाइम द ऑब्जेक्टिव, अभी इन्होंने जो सेकंड टाइम पे अनाउंसमेंट किया है हाउसिंग फॉर ऑल के लिए न्यू स्कीम, ओके, द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू ड्राफ्ट अ फुल प्रूफ स्कीम. नाउ सेकंड टाइम में बिकॉज फर्स्ट टाइम वी कुडंट अचीव द टारगेट, जो टारगेट था वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए. तो सेकंड टाइम में व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस सच स्कीम, ओके, सो द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू ड्राफ्ट अ फुल प्रूफ स्कीम सो दैट हाउसिंग फॉर ऑल नो लॉन्गर रिमेन्स अ स्लोगन बट बिकम्स अ रियलिटी इन द टेंजिबल फ्यूचर. कि ये सिर्फ एक स्लोगन तक ना रह के रह जाए, बिकॉज गवर्नमेंट तो बस एक नारा लगा देती है सबको घर मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि ये चीजें सिर्फ एक स्लोगन में ही ना रह जाए, वर्ड्स में ही ना रह जाए, बट इट दे बिकम रियलिटी इन द टैंजिबल फ्यूचर. ये आगे चल करके एक सच्चाई हो जाए, मतलब पीपल दे शुड गेट देयर ओन हाउस. अगर वो 40% 50% भी खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड गेट देयर हाउस. ओके, व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल? नाउ यू कैन से टेक्निकल. अगर इस पैसेज में अगर आपको एनालिटिकल और टेक्निकल में प्रेफर करना होगा, सो यू विल यूज द वर्ड टेक्निकल. आप यहाँ पे बिकॉज डेटा बेस्ड है, सो यू कैन यूज टेक्निकल. ओके, yes, and suggestive also. So dominating tone we have basically these two, suggestive and technical. Okay. Yes. Yes. Point error. Protection in which terms you are asking, Arun? A bit law-free. Analytical we use when data is not given and pros and cons is discussed. Now this article is full of data, so you can say that it is analytical. Everyone is saying had claimed. Why had claimed? Why not this? Why have claimed is wrong? Tell me. The worst, however, was yet to come. अभी वो आना बाकी था, वो worst आ चुका है. As the week means current week we are talking about, saw multiple floods. वहां पे काफी सारे floods हमको देखने मिले in Himachal Pradesh, ठीक है. So the week saw multiple floods in Himachal Pradesh and Uttarakhand that have claimed. So this have is used for floods. Antecedent is floods, okay. So at least 60 lives since Sunday. Sunday से लेकर के अभी तक की बात हो रही है. Since Sunday means from that time till now. So they have claimed since oblique for plus time. We can use present perfect tense also, and we are not getting the sense of past only. Since Sunday till now, अभी तक का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तक ये आर्टिकल लिखी गई है तब तक जो है 60 लोगों की जान जा चुकी है. So claimed is wrong, but yes, we need the perfect tense. Yes, everything is correct. There's no error. Because contextually, see, if you are writing had claimed, that is also not wrong. I'm not saying that had claimed is wrong. My only point is when have claimed is not wrong. जब ये सही है तो why to change it? जब ये सही है तो फिर had claimed क्यों करेंगे? Okay, so everything is correct. There is no error here. Okay, you have to use these two phrases in a sentence of your own. This is your homework, guys. We will meet at 9 a.m. 9 बजे आज फिर मिलेंगे. We have that 9 a.m. session. Super mock 2 के session के साथ we will be back. Okay. Okay. So we have super mock 2. Good questions. फिर से मैं बता रही हूँ, those who are targeting EPF4 they should join this. EPF4 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो you should join this batch. ठीक है, SSC वाले तो ज्वाइन करेंगे, EPF4 वाले भी ज्वाइन करें. So it will be helpful for EPF4 also. ठीक है. Do hit the like button, subscribe to our YT channel, share this session with others. Okay. Thank you everyone and take this session. Take care.